Hello and welcome to Desi Lifestyle in Europe. This is lesson 2 on how to drive a car. And we have here Saida with us. She's ready. Saida, you have already adjusted the seat. Yes. Right? Yeah. Then we start with putting on the seat belt. Yeah. सबसे पहले हम सीट बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पे इसमें लगानी है कि कोई मुड़ी भी ना हो, बिल्कुल सीधी हो। And then start your car with your foot on the brake. You can just press the button for start. क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार है तो आपको इसमें कोई गियर खोजने की जरूरत नहीं है कि मैंने कौन से गियर में करना है। तो मैंने सिंपली जो है ब्रेक पे पाँव रखा है और सिंपल मैं बटन दबाऊंगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। And now you put the gear into drive as we learned in previous lesson. अब हम गियर को डी में मुंतकिल करेंगे जो हम पीछे बता चुके हैं। As we can see in the display also, it's showing D. We are ready to drive. And now when Saida slowly release the brake, the car will move forward. अब जैसे ही मैं ब्रेक से पाँव हल्का हटाऊंगी गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। फिर मैं हल्का हल्का पाँव हटा रही हूँ। Now take your foot off the brake pedal. Slowly press down on the acceleration pedal in order to get your car move forward. अगर आप स्पीड देख करते हैं तो आपने चाहे ये ब्रेक से पाँव हटा के ये गैस का पेडल है इसको दबाना है जो साथ ही है जिसमें मैंने पाँव रखा हुआ है। Okay, let's do it. ओके अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक से पाँव हटा रही हूँ और ये गाड़ी मेरी चलनी शुरू हो गई है। और ये क्योंकि मैंने मोड़ना है तो मैंने स्टीयरिंग को पूरा मोड़ रही हूँ। अभी मैंने ब्रेक से बहुत आहिस्ता आहिस्ता पाँव हटाया, पूरा नहीं हटाया। Remember, when you are driving downhill, you don't need to accelerate so much. अभी हम क्योंकि लहाई की तरफ जा रहे हैं तो हमने पूरा पाँव नहीं छोड़ना, ब्रेक से बहुत आहिस्ता आहिस्ता पाँव छोड़ना है। और अभी मैं इसको मोड़ के आहिस्ता आहिस्ता बहुत आहिस्ता पाँव दे सकते हैं खुद ही। अभी मैंने पाँव काफ़ी हद तक छोड़ दिया। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता गैस के पेडल पे पाँव दबा रही हूँ। And when you're driving uphill, you need to accelerate a bit more in order to increase your speed. अभी मैं थोड़ी सी चढ़ाई पे जा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा गैस देनी पड़ रही है। So, congratulations, you have just completed your lesson number 2. Yeah. See you in next video for lesson number 3. Okay, bye-bye. Bye.